Hello everyone. So let's start the next topic, the imperial officials. As we are going through the Kings and Chronicle chapter, in that already we read about the titles and gifts. So now let's come to the imperial officials, how they were recruiting the Mughal empires were recruiting the officials, that is the nobility, and how they were assigning them the ranks. So Mughal chronicles, especially Akbarnama, have bequeathed means कि when any person leaves a will और विल के थ्रू वट एवर ही लेफ्ट, फाइन, विल पता है ना आपको, वसीयत जिसको हम कहते हैं, फाइन, विलिंगली व्हेन एनी पर्सन हैंडेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू समवन, लाइक जैसे पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है उनकी प्रॉपर्टी, सेम वे में द मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली अकबरनामा हैव बिक्विथ अ विजन ऑफ एम्पायर इन विच, अपना मतलब छोड़ कर गए हैं वो अपनी विलिंगली उन्होंने अपने अकबरनामा अपनी बायोग्राफी में विलिंगली उन्होंने अपनी सारी लाइफ की जो स्टोरी है, जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ही लेफ्ट एंड अ विजन ऑफ एम्पायर, और उनका एम्पायर के बारे में क्या सोचना था कि इन विच एजेंसी रेस्ट ऑलमोस्ट सोलमली विद द एम्पर, और उनकी विजन ये थी कि सारा मुगल एम्पायर में जो भी रैंक हैं, जो भी रिक्रूटमेंट्स है, दैट शुड बी ओनली विल बी रिसाइड विद द एम्पर, कि एम्पर ही ये सारी असाइन करेंगे ऑल द रिक्रूटमेंट्स एंड द रैंक्स and all the orders also, and everyone will follow his orders. And yet we look more closely at the rich information these historians provide about the apparatus hota hai administration of the Mughal state. Apparatus means administration. So about the administration of the Mughal state, we may be able to understand the ways in which the imperial organization was dependent on several different institutions to be able to function effectively. So when we will see these all the biography and the chronicles which were written by the different people about Akbar's kingdom and about Akbar's administration, so then we will see that ki imperial organization jo thi, that was fully dependent on the several different institutions. He himself was not only running the whole empire, but there were the different institutions and organizations which were running it and to running his empire effectively. So one important pillar of the Mughal state was its corps of officers. Corps means group of officers, and also referred to by historians, और historians ने उनको नाम दिया है nobility का. And nobility was recruited from diverse ethnic, और इन nobilities को they were recruiting means appointing from different ethnic and religious groups, different races, different groups, religious groups. This ensures that no faction was large enough to challenge the authority of the स्टेट, और ये शो करता था कि कोई भी उनकी अथॉरिटी को जो एम्पायर की उनकी अथॉरिटी थी, उनकी जो पावर थी, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था. द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, और ये जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स था विच वॉज अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, दैट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स. हाँ, यू नो दैट बुके में डिफरेंट फ्लावर्स आर देयर, which is called in Hindi गुलदस्ता, and Persian में also it is called गुलदस्ता. So held together by loyalty, और ये सारा जो ऑफिसर्स थे ये आपस में ऐसे मिलकर रहते थे जैसे बुके में सारे फ्लावर्स एक साथ बांध देते हैं ना उनको, और एक साथ रहते हैं वो, और वो सारे एक दूसरे के साथ ऐसे बंध के रहते हैं कि दे आर लॉयल. सेम वे में दीज ऑल ऑफिसर्स ऑफ नोबिलिटी, दे वर सो टाइड टू लॉयल, टाइड टू देयर एम्पर, दैट कि दे वर वेरी लॉयल टू हिम. लॉयल मतलब वफादार होते थे अपने एम्पर के लिए. इन अकबर्स इम्पीरियल सर्विस, तुरानीस, that is Turkeys, Iranians, nobles were also present from the earliest phase of carving out a political dominion. So when we were talking about the dominion, it means that sovereignty means power, control, independent control. When we were talking about, that is called dominion. So political sovereignty की अगर हम बात करें तो here all Turanian Iranian nobles were there in his court, and many had accompanied हुमायूं also, और काफ़ी सारे ऐसे तुरानियन और ईरानियन ऐसे नोबल्स भी थे, those who have accompanied हुमायूं also, other migrated later to the Mughal court also. So when we were talking about this Mughal nobility, when we talk about this blue box, in this we can see that the nobility of these Mughal emperors were shown here from the different parts of the world, कि they were from the different, like here it is given कि many races were there, Arabs, Iranians, Turks, Tajiks, Kurds, Tatars, Russians. So different people and different rulers के time पे whichever different people were there in their Mughal courts, that is given here. You just give one reading to it.
So next is the two ruling groups of Indian origin entered the imperial service from 1560. So two ruling groups of India also entered into the Mughal nobility in 1560 onwards, the Rajputs and Indian Muslims. Rajputs तो you already know that Rajput जिनको राजा कहते थे उस समय में, and Indian Muslims जिनको शेख जादास कहते थे. So ये दो ग्रुप्स मुगल कोर्ट में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दे एंटर. द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज अ राजपूत चीफ. सबसे पहले जिसने ज्वाइन किया था दैट वाज द राजपूत चीफ हु वाज कॉल्ड राजा भारमल कछवाला ऑफ अंबर. You know that Jodhabai was the daughter of Raja Bharmal only, to whose daughter Akbar got married, and members of Hindu caste inclined towards education and accountancy were also promoted. And even Hindu caste में से जो members बहुत ज़्यादा educated, intelligent थे and they were very good in accounts, they were also promoted. A famous example is being Akbar's finance minister, जैसे Raja Todermal. Raja Todermal was given a very highest rank in the Mughal court, in the Akbar's court, that is of a finance minister who belonged to the Khatri caste. Khatri caste, you know that? That is one of the caste in India. So Iranians gained high officers under Jahangir. Iranians को सबसे high rank मिले officers के under Jahangir, whose politically influential queen Noorjahan. Noorjahan herself was of one Iranian princess. So Aurangzeb also appointed Rajputs to high positions, and under him the Marathas accounted for a sizable number within the body of officer. और उनके ऑफिस में, उनके कोर्ट में सबसे ज़्यादा नंबर जो था वो मराठास का था इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब. एंड ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेल्ड रैंक्स. और जितने भी ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पोजीशंस को होल्ड करके रखते थे, दे वर हैविंग सम रैंक्स लाइक मनसब्स कंप्राइजिंग 2 न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस. और ये मनसब में 2 डेजिग्नेशंस होते थे. वन वॉज जट, that is ZAT, Z, which was an indicator of position in the imperial hierarchy, and the salary of the officials, that is mansabdars, and Sawar, which indicated the number of horsemen he was required to maintain in service. So means their salary depended on कि how much the Sawars, that is the number of the horsemen he has and how many he is maintaining, on that depends the salary of these officers, that is the mansabdars. Fine. So in the 17th century, mansabdars of 1000 jat or above ranked as nobles, जिनके पास 1000 से ज़्यादा होते थे हॉर्समैन, सो दे वर रैंक्ड एज नोबल्स, जिनको नाम देते थे उमारा. उमारा वॉज इवन हाइएस्ट रैंक दैन आमिर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में. So nobles participated in military campaigns with their armies. ये nobles were also participating in military campaigns whenever the emperor was going on any war. So these nobles armies were also participating in that, and also served as officers of the empire in the provinces. Fine, they were the officers of the emperor only. So each military commander recruited, equipped and trained, and the main striking arm of the Mughal army was the cavalry. और हर मुगल आर्मी का सबसे important feature था उसकी cavalry. Cavalry means, you know that? What is that? कितनी उनके पास सेना है, that is depends on it. And the troopers maintained superior horses also. और ये they were maintaining the superior horses which were branded on the flank by the imperial mark. और उनके ऊपर, इन horses के ऊपर imperial stamp भी लगाई जाती थी, जिसको दाग भी कहते थे. उसको दागते थे, उनकी बॉडी के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये राजसी घोड़ा है या फिर मुगल एम्पायर का घोड़ा है, घुड़सवार एंड घोड़ा है. द एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक आल्सो. सो जब कभी किसी के रैंक में चेंज भी करनी होती थी, दैन एम्परर वॉज पर्सनली डूइंग दैट आल्सो. इवन ही हैज़ टू चेंज द टाइटल ऑफ समवन एंड ऑफिशियल पोस्टिंग किसी की चेंज करनी फॉर ऑल एक्सेप्ट द लोवेस्ट रैंक. सिर्फ लोवेस्ट रैंक के ऑफिसर्स के अलावा बाकी एवरीथिंग वॉज डन बाय द एम्परर. एंड अकबर हु डिजाइंड द मनसब सिस्टम आल्सो एस्टैब्लिश स्पिरिचुअल रिलेशनशिप. मनसबदारी सिस्टम आल्सो ही डिजाइंड, बट ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ वेरी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द सिलेक्टेड बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी. सिलेक्टेड बैंड मीन्स सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ हिज नोबिलिटी में से कुछ लोगों के साथ ही वॉज हैविंग वेरी स्पिरिचुअल रिलेशंस. ही वॉज ट्रीटिंग दैम एज हिज डिसाइपल, जिनके साथ बैठकर ही अपने रिलीजियस मैटर डिस्कस किया करते थे. टू हिम ही वॉज कॉलिंग हिज डिसाइपल्स, दैट इज हिज स्टूडेंट्स, जिनको कि पर्शियन में कहते हैं मुरीद. फॉर मेम्बर्स ऑफ द नोबिलिटी इम्पीरियल सर्विसेज वॉज अ वे ऑफ एक्वायरिंग पावर. अब ये मेंबर जो होते थे नोबिलिटी के लिए, उनके लिए इम्पीरियल सर्विस का मतलब था पावर मिलना,
ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी मिलना, वेल्थ मिलना एंड हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन मिलना उनको. सो इफ़ दे वर गेटिंग एनी इम्पीरियल सर्विस, अगर एम्परर के पास उसको अगर कोई सर्विस मिलती, इट मीन्स दैट दे गॉट पावर, दे गॉट वेल्थ एंड दे गॉट रेपुटेशन ऑल्सो. अ पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द सर्विस पेटिशन थ्रू अ नोबल. अगर किसी पर्सन को बनना होता था, इम्पीरियल सर्विस को ज्वाइन करना होता था, सो देन ही वॉज सेंडिंग वन पेटिशन यू नो दैट एप्लीकेशन थ्रू अ नोबल, किसी नोबल के थ्रू, हु प्रेजेंटेड दैट विच इज़ कॉल्ड तजवीज़. उस पेटिशन को कहते थे पर्शियन में तजवीज़ टू द एम्परर. फिर वो एम्परर को प्रेजेंट करते थे एंड इफ़ द एप्लीकेंट वॉज फाउंड सूटेबल, अ मनसब वॉज ग्रांटेड टू हिम. फिर उसको कुछ टेरिटरी असाइन कर दी जाती थी, वेयर ही वॉज ऑल्सो कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड ऑल्सो मेंटेनिंग सम आर्मी विच वॉज गोइंग टू हेल्प द emperor at the time of war. And the Mir Bakshi, paymaster general, stood in open court on the right of the emperor and presented all candidates for appointment or promotion. This was the work of the Mir Bakshi. He was always standing on the right hand of the emperor and also presented all the candidates for the appointments or promotion. जिनकी appointment होनी होती थी या फिर promotion होना था. While his office prepared orders bearing his seal and even his, उन्हीं के ऑफिस में द ऑर्डर्स भी प्रिपेयर किए जाते थे और उन ऑर्डर्स के ऊपर सील एंड सिग्नेचर एज वेल एज दोज ऑफ द एम्परर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मीर बख्शी की तो सील चाहिए थी, उसके साथ साथ एम्परर की सील फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दोज ऑर्डर्स. एंड देयर वर टू अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एट द सेंटर वॉज दीवाने आला विच वॉज कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर. दीवाने आला मीन्स मिनिस्टर of grants or madad-e-maash in charge of appointing local judges और काजीज. दो और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे, ठीक है. सो एक फाइनेंस मिनिस्टर एंड दूसरा सदर उड सदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, जो ग्रांट दिया करते थे, और मदद-ए-माश जो कि इंचार्ज थे अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज़ के. इनकी ये ड्यूटीज़ थी. मतलब एवरी मिनिस्टर वॉज असाइंड सम ड्यूटीज़ एंड 3 मिनिस्टर्स ओकेशनली came together as an advisory body, and these 3 ministers were always came together to the court of the emperor as an advisory body who was giving the advice to the king, advice to the emperor, but were independent of each other. But they were not dependent on each other. They were independent to take their own decision and even independent to give their own suggestion to Akbar. And Akbar with these and other advisors shaped the administration. Fiscal means the trade related policies, fine. And when we fiscal means revenue related issues, and when we were talking about monetary institutions means which are related with money. So nobles stationed at the court, that is called ताइमते रकाब, were a reserve force. So noble station at the court, जो कोर्ट में जो नोबल स्टेशन रहते थे, जो हमेशा वहीं पर अपॉइंटेड रहते थे, they were a reserve force, जिनको रिजर्व फोर्स माना जाता था, to be deputed to a province और मिलिट्री कैंपेन, जिनको कि मिलिट्री कैंपेन के लिए रखा जाता था. दे वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड दे वर हैविंग ड्यूटी दैट कि मॉर्निंग एंड इवनिंग दे हैव टू कम टू द एम्परर टू एक्सप्रेस सबमिशन टू द एम्परर इन द पब्लिक ऑडियंस हॉल. और हर रोज़ के रोज़ उनको प्रेजेंट रहना पड़ता था दीवाने आम में, जिसको कहते हैं पब्लिक ऑडियंस हॉल, जिसमें पब्लिक से मिला करते थे. देयर इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर दीज नोबल्स टू बी प्रेजेंट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ द टाइम्स, एंड दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड राउंड द क्लॉक. और दिन रात 24 घंटे उनका ये काम था कि एम्परर और उनके घर की देखभाल करना और उसको सेफ गार्ड रखना. Information and empire. So the keeping of exact and detailed records was a major concern of the Mughal administration. The Mir Bakshi, he supervised the corps of code writers. मीर बख्शी का ये भी काम था, he was supervising the group of court writers, जिनको वक्ता नवीस कहते थे. वक्ता नवीस means time to time who was recording each and everything. So who recorded all applications and documents presented to the court and all imperial orders also, जिसको फरमान कहते थे orders को. In addition to agents वाकिफ of nobles and regional rulers, they recorded the entire proceedings of the court. They were also recording the entire proceedings of the court. कोर्ट में जो भी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक whatever was happening, that was recorded by these people under the beading, that was under the heading news from the exalted court, that is अकबरात दरबार मुअल्लत, with the date and time of the court session, that is टाइम को कहते थे पहर. 4 पहर होते हैं ना, फाइन. सो अकबरात कंटेंड, अकबरात मीन्स दैट वाज द सेशन विच वाज रिकॉर्डिंग ऑफ द
court proceedings, that was called Akbarat, contained all kinds of information such as attendance at the court, all the nobles attendance, then grant of the officers ki which office should get how much grant and titles, then diplomatic missions means political issues, political missions, then presents received or the enquiries made by the emperor about the health of an officer. So these all information is very valuable for writing the history of the public and even private lives of the king and nobles. This was very very important. These all information was very important. So news reports and important official documents traveled across the length and breadth of the regions. Then how they were sending these all messages under Mughal rule by imperial post, round the clock relay. I told you earlier also कि there was a long, जैसे relay race होती है ना, उसमें one person was holding that a rod and he was running to the other person, and then that person is taking that rod and then he is running again. So same way में this posting system of that time to send the message or to forward or the message to one place to another place, the same way there was the team of the members were there, those who were placed and stationed at a distance of some kilometers round the clock, and they were carrying a paper rolled up in a bamboo containers. An emperor, within a few days only, he was getting all the information. He received the reports from even distant provinces also within a few days. Fine. So such a system was, postal system was there. That was very efficient postal system. So agents of nobles posted outside the capital, and Rajput princes and tributary rulers. Tributary rulers means those rulers who were under the emperor but they were running their kingdoms independently, but they were giving annually some tribute to the emperor to run their administration. Fine. Tribute matlab kuch annually amount they were paying to the ruler, to the emperor. So that is why emperor allowed them to run their kingdoms independently. So when we were talking about these tributary rulers, all accidentally copied these announcements. So these people were agents of nobles, those who were posted outside the capital, and Rajput princes and tributary rulers, all accidentally means very hard work के साथ, means very tough था it was, and they were doing that with very hard work से. They copied these all announcements and sent their content by message back to their masters. जो ये message उनके पास पहुंचता था, बड़ी immediately they were reverting back to those messages or announcements and they were sending it back through the messenger to their masters. So the empire was connected. These people, those who were posted, that persons, those who were taking these messages, they were not going inside the court, but they were just forwarding that message to the persons, those who were stationed outside, जिनको पहले से ही पोस्ट किया गया था outside the kingdoms, प्रिंसेस के किंगडम्स के या फिर ट्रिब्यूटरी रूलर्स के किंगडम्स के बाहर, वो उनकी टेरिटरी के बाहर वो पहले से ही पोस्टेड होते थे, दैट दीज पीपल वर टेकिंग दोज मैसेजेस टू देयर रूलर्स एंड देयर प्रिंसेस, एंड इमीडिएटली देन the response they were taking from their master and immediately giving back again to that person who has to hand over again back to the emperor. So empire was connected by a surprisingly rapid information loop for public news. Loop means a circle for public news. So till today, till here. So next topic, next day we will be doing.